Okay, we are going to start our class. Join your hands and start chanting of Omkar thrice. Sairam to all of you present over here. And this is the oral test, second tool of second assessment. And presentation is almost over. Few children left and they are not attending the class. And definitely they will not get marks. And now these students will open their camera. Akhil, Aniket, Ankush, Anmol, Arman. Akhil, Aniket, Ankush, Arman is absent. Shahid. ठीक है सर। यस बेटा। सर एक रिक्वेस्ट है सर, इस बार सर आप पीछे से लीजिए ना। क्यों? मतलब पीछे से सर, इस बार प्लीज सर। सर उन्हें भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि स्टार्टिंग से करने में क्या हाँ फील सर, प्लीज होता है। सर। पीछे से देखता हूँ कौन प्रेजेंट। अच्छा एक काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये आप मुझे 2 मिनट पहले सजेशन दे थे तो मैं उस समय स्टार्ट कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। सो मेरा प्यारा अखिल सबसे पहले मुझे क्वेश्चन के आंसर देगा। एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सभी को, आप ये बताइए मुझे कि मान लीजिए मैंने आपसे 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे और आप उन चारों का आंसर आपको नहीं आया, तो क्या आपको 0 मार्क्स मिलेंगे? यस सर। ओके। और क्या आपने सारे आंसर दे दिए तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे? यस सर। ओके। आपसे अभी हम लोग मार्च से इस प्रकार से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। आप कितने अटेंटिव रहे हैं, आपका लॉजिकल रीजनिंग कैपेसिटी क्या है, कंसेप्ट कितना क्लियर है और कंप्रहेंशन क्या है, ये आपका मॉनिटर किया जा रहा है फ्रॉम द फर्स्ट डे, कि कितने बच्चे बहुत सारे आंसर देते हैं जनरली, ठीक है। आप तो करण भी आ गए हैं। करण बेटा आप मुझे देख के गायब हो जाता है। करण आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन हो गया है? नहीं हुआ है। करुणा भी आ जाइए, उसका भी नहीं हुआ है, इनको 0 नंबर मिल जाएंगे। ओके अखिल, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल? सर लिविंग सब्सटेंस सर न्यूक्लियस। अनिकेत? सर प्रोटोप्लाज्म। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, अंकुश, which is the largest cell in our body? What, sir? Largest cell in our body? Sir, I don't know. Shahid? Nerve cell. Very good. Okay, now second question. Akhil, what do you mean by pseudopodia? Pseudopodia. अच्छा छोड़ दो। Another question. What is the role of plastids in plants? So plastics. Plastids. Plastids. So the role of plastids in plants is that सर नहीं पता। अनिकेत?
Sir, they help in photosynthesis. Yes. Ankush, difference between plant cell and animal cell. सर उनके अलग अलग डिफरेंस पार्ट बताने हैं क्या? Differences in plants and animal cell, beta. You decide. Sir, plant cell contains cell wall and animal cells does not contain cell walls. One more difference. Plant cell have chloroplast and animal cells do not have. Chloroplast. Okay. Shahid, Yes, sir. where are chromosomes found in a cell? Sir, chromosome. Sir, nucleus. Good. Shahid, what is red data book? Sir, the source book that have all information about sir. कौन से animals? Endangered animals. Okay, I asked this question to Akhil and you replied. No problem. Sorry, sir. No problem. सर आपने सर मुझसे नहीं पूछा ये. मैं आपसे पूछ रहा था, उसने आंसर दे दिया. चलो, कोई बात नहीं. Akhil, what is the difference between flora and fauna? Sir, flora are the plants that are found in a particular area, and flora are the plants found in a particular. So means that flora are the plants and fauna are the plants. Okay. Aniket, Yes, sir. what will happen if all lions are removed from the jungle? Sir, the cycle will be disturbed. The How? food chain. Sir, as the so the lions eat the other animals. If they will increase in numbers, then other animals will also increase in number of food chain, and the other chain will be also disturbed. Ankush, you want to speak something about it? Yes, sir. Yes. Sir, if lion will be, there will be no lion. The quantity of herbivore animal will be more, so they will eat plants and we do not have oxygen. Very good, very good. Akhil, how can we control fire? Sir, there are so many methods. There are mainly three methods of controlling fire. So first by putting water, second by putting sand, and third by I, putting that. I am not asking कि पानी डाल दो, पानी के ऊपर उसको डाल दो या उसको पानी में डाल दो. I am not asking like this. How can we control fire? Three basic principles by which we can control fire. So we can control fires by cutting the oxygen supply. Very good. And sir, we can control fire by sir increasing its ignition temperature. Okay. And sir, third, sir, we can control fire by sir by putting sand on it. Okay, okay. Correct answer. Acha, Aniket, why should matchstick be rubbed on a rough surface to ignite it? So when the matchstick is rubbed in the rough surface, so then its ignition, so the heat required, for its ignition temperature reaches, so it lights. So from where this heat provided? From the rough by rubbing it in the rough surface. By friction, by friction. Yes, Yes, correct. Okay. Ankush,
What do you mean by fuel? Sir, it is a source which is needed for burning. Shahid, what is fuel? A material that is burned to produce energy, like say heat and power. Okay. Last question to all of you, one by one. Akhil, what happens if we go on cutting trees? Sir, if we will cutting trees, sir, it will. If we will cut trees, uh, the environment occurs with the deforestation, and due to that deforestation, we can face too much global warming and lack of oxygen. Okay. Aniket, Yes, sir. water is not used to control fire involving electrical equipments. So, because if water is used in controlling the fire of electrical equipments, the person who is throwing the water in that fire will get a shock and he may die. So, because water is a good conductor of electricity. Ankush, LPG is better than wood. Yes, sir. Sir, because LPG has more calorific value and it is a cleaner fuel. Yes. Shahid, what is calorific value? So amount of combustion, amount of combustion that Amount of. I forgot the definition of. Acha, do you know the unit of calorific value? Yes, sir. Yes, Kilojoule. kilojoule per kg. Yes, sir, per kg. Okay, thank you very much. Now next group of children. Okay, next. Anmol, present or absent? Arman, Aryan, Brajesh, Gagan, Geetika, Karan. ये सब देखते हैं ना अनिकेत, इनमें से कौन प्रेजेंट है मुझे बताना बेटा. Sir, current present है. करण, यस हाँ बेटा, अपना आपका टेस्ट दे रहे हो ना? सर वो मैं रेडी नहीं हूँ. नहीं, तू रेडी कभी रहेगा भी नहीं बेटा. तेरा प्रेजेंटेशन में भी 0 डाला हुआ है अभी तक. ये मंथ की लास्ट डेट के 2 दिन पहले, सैटरडे संडे लास्ट वर्किंग डे और सैटरडे दोनों छुट्टियां हैं. तो कुछ होना नहीं है. अभी दे दो जितना दे सकते हो. करुणा, कृतिका, गगन, गीतिका, कौन प्रेजेंट है इसमें से? यस सर. सर कृतिका है. हाँ कृतिका, आप तैयार रहिए. साहिल. यस सर. तो करण, कृतिका, साहिल, मनु. यस सर. हाँ, मयंक नहीं है. मुस्कान. यस सर. हाँ, चारों अपने अपने कैमरे ओपन कर लीजिए जिससे मैं आप लोगों का चेहरा देख सकूं. देखिए, दीपावली की मिठाई खाने के बाद हम लोग कितने अच्छे दिखने लगे हैं. हाँ, करण बेटा बढ़िया कैप लग रही है.
हाँ, बाकी लोग मुझे दिखना चाहिए बेटा। अनिकेत, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, केवल वही स्क्रीन पे दिखे तो थोड़ा सा मुझे आसानी रहती है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन टू करण। Why LPG is better domestic fuel than wood? Sir, LPG fuel is easy to burn. Kratika, keep your camera on, Kratika. Why LPG is better domestic fuel? Muskan, सर नहीं पता। Sahil, Sir, because it is easy to burn and it produces less pollution. good. Manu, how can we control fire? Sir, by cutting the supply of oxygen, by removing the fuel, and By sir, by removing. Yes. Second question to Karan. What is spontaneous combustion? Kratika, what is spontaneous combustion? Manu, Sahil, Sir, spontaneous combustion, sir, when और नहीं सर in this suddenly bursts मतलब क्या होता है, मतलब एकदम से इसमें burst, अरे यार yes, सर catches in fire. this Oh, next. come Yeah. Sir, spontaneous combustion refers to the death from a fire or ignition without an apparent. sir in which material suddenly bursts. करण, देख के नहीं बोलना है, आपका कैमरा ऑन रहेगा, then only your answer will be considered. Muskan, Yes, sir. what is combustion? Sir, combustion is a chemical process in which the heat and light is produces. Okay. करण बेटा, करण, Yes, sir. हाँ, यस सर बोलते हैं करण. What is red data book? Kratika, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है कृतिका बेटा. it is a book which keep records of endangered species. Okay, yes. Sahil, Yes sir. what will happen if the top layer of soil is exposed? Sir, humus and all the bacteria for growing crops are present in the topsoil. Sir, if this topsoil will be exposed, then then we are unable to grow crops and trees and a whole. Means, Manu, what is the difference? Yes. What is the difference between
endangered species and extinct species? सर नहीं पता। बिल्कुल नहीं पढ़ रही है, घर में बैठी है जब से, है ना? मुस्कान, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? Sir, cutting down of trees. ओके, what is the function of chromosomes? Karan? अच्छा, where are chromosomes found in a cell? नहीं मालूम। कृतिका? कृतिका? नहीं पता। साहिल? Sir, nucleus and nucleus. And what are the functions, beta? Sir, function. Sir, chromosome याद is नहीं आ रहा। made up of Manu? Why leaves are green? Yes, sir. Why leaves are green? Sir, because leaves contain chlorophyll. Okay. Muskan, Yes, sir. name the cell part that has tiny holes. Sir, red blood cell. No. What is the difference between unicellular and multicellular? Karan? Kratika? Unicellular contains one cell and multicellular contains many cells. Okay. Sahil? Yes, Sahil? sir. The unicellular organisms are made up of only one cell that carries out all of the functions needed by the organism, while multicellular organisms I am use. asking, Yes, sir. I am not asking the same question to you. Yes, I sir. am asking another question. है ना? Why we feel pain when we pull nails and hair? Sir, because nails are. Sir, because there is the supply of blood. And Sir, there is. while cutting, no pain. Sir, because sir, in upper hairs, sir, there is no supply of blood, but where they from where there from where they have grown, sir, in the skin, from the skin there is the supply of blood. Okay. Manu, which part of the cell called the powerhouse of the cell? Manu, powerhouse of the cell. Yes, sir. Powerhouse of the cell. Muskan? Muskan, powerhouse of the cell. Sir, nucleus. No. Sir, Okay. mitochondria. क्या बोला? Mitochondria. That is mitochondria. Mitochondria.
Yes, your test is over. Ninansa, Yes, sir. open your camera. Niyati, Niyati, Yes, sir. Palak, Yes, sir. Payal. Yes, sir. ओहो पायल दीदी आई है क्या? आपका प्रेजेंटेशन में भी जीरो लगा हुआ है, जीरो ही चलने दे बेटा। अब पायल चुप हो गई बिल्कुल, अब पायल कुछ नहीं बोलेगी और सडनली मीटिंग लेफ्ट कर देगी। बहुत अच्छा है। जब आप क्लास में रहते थे तो वॉशरूम भी जाना था तो पूछ के जाते थे, अब यहाँ क्लास छोड़ के भी चले जाते हैं बिना पूछे। ये गलत बात है ना नियति? दिस इज नॉट अ गुड थिंग। Yes, sir. हाँ प्रखर, मोदी जी कहाँ गए हो? Sir, he is absent. He is absent. Okay. Pranav Pradhan. Present, sir. Okay. Now I am asking question. Ninansa, Niyati, Palak, Payal, and Pranav. So first question to our great Sarmaji, Ninansa Sarmaji. Are you ready, बेटे? सर डर लग रहा है बहुत। डर लग रहा है? चलो अपन डर दूर करते हैं। जिन 5 बच्चों का नाम लिया है वो सब कैमरा ऑन करें, अभी सबके डर दूर करते हैं। और किसको डर लग रहा है? प्रणव को डर लग रहा है क्या? पलक को डर लग रहा है? पलक को? Yes, sir. नियति को? Yes, sir. और पायल को भी लग रहा है? चलो हाथ ऊपर करो, डर को भगा दो। अब कोई डर नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन टू निनांसा, नेम द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स। यस, देखा, डर लगने की बात ही नहीं होती है। द स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इनसाइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड, दिस इज नियति। Gene. No. Name the power, Niyati, name the powerhouse of the cell. Mitochondria. Yes. Palak, the cell of an ant and an elephant is similar in size. No, sir. No. क्या प्रणव? No, sir, they are not similar. Okay. Payal, bacteria is the largest cell. True or false? सर फॉल्स। Okay. Second question. Why chloroplasts are found only in plant cell? Ninansa. Because plastids are present in plants and chlorophyll plus plastids are chloroplasts. Okay. What is the function of cell wall in a plant? Niyati. Sir, it protects the plant. Okay. Palak, differences between unicellular and multicellular organisms. Single cell organisms are called unicellular, and organisms have more than one, they are called multicellular. Okay, okay. Payal, what is meant by tissue?
What is meant by tissue? Pranav. That tissue is a group of cells which make organs. Yes. Yes, Ninansa, next question. Yes, sir. Yes, sir. What are the consequences of deforestation? Sir, please repeat the question. What are the consequences of deforestation? Don't know. No, Niyati. sir. Niyati. Sir, high temperature leads to global warming, Yes. so shortage of food, desertification. Okay. Palak, Yes, sir. what do you mean by migration? Plants move one to another place for migrate. Plants. Sir, sorry. Birds. Ah. Achha, human being also migrate? Yes, sir. For their education. And so many other purpose Yes, in class fifth you learned about it. yes, sir. Job also. Job also, in searching of job. Okay. Payal, the difference between endangered species and extinct species. पायल चुप रहने से तो कुछ नहीं होगा, सर तो 0 नंबर डालेंगे. Okay. Pranav, differences between endangered and extinct species. Extinct species are those species in which no other living member is there of the species. Endangered species are the species which are on the verge of extinction. Very good. Ninasa, what are the harmful effects of burning fuel? Ninansa. Yes, sir. Harmful effects of burning fuel. Yes, sir. Sir, pollution. Okay. And little bit elaborate your answer. Don't know. Yes, Niyati. Yes, sir. What are the harmful effects of burning fuel? Sir, pollution and pollution. Okay, pollution. I am asking next question to you, Niyati. Yes, sir. Why LPG is better than wood? Sir, because it burns easily and it has low calorific value. Okay. It is inflammable substance. Okay. It leads to low pollution. Okay. Payal, why middle zone of a flame is yellowish in color? Yes, Palak. Why middle zone of a flame is yellowish in color? Palak. Sir, नहीं पता. नहीं पता. Yes, Pranav. Sir, due to unburnt carbon particles which emit light. Okay, it is incomplete combustion.
Last question to all of you. Why should we conserve biodiversity? Ninansa. अरे निनांसा जल्दी बोलो, 5 मिनट्स लेफ्ट है, हमारी समृद्धि वेट कर रही है तैयार होकर बहुत देर से। नियति, नियति, Sir, because it is important to save our biosphere. ओके। पलक, what are the causes of deforestation? Increase carbon dioxide. Causes किन किन कारणों से deforestation होता है? Cutting of trees. That is deforestation. क्यों काटते हैं? पलक, Sir, making building, house. Okay, okay. Industries. Payal, what is red data book? And last question to Pranav Pradhan. What will happen if the top layer of soil is exposed? If the top layer of soil is exposed, it is the layer which contains humus and it is the most fertile layer, and beneath those layers there will be hard rocks in which it will be difficult to cultivate. Okay, very good. Okay, your test is over. And next, Prince Meena. Yes, sir. Are you ready? Prince Meena, I am asking something. Prince Priyanka, Raj, Rishika, Samriddhi. Yes, sir. Sanjay. Yes, sir. हाँ, तो Rishika is there? No, sir. तो समृद्धि, प्रिंस एंड संजय, इसके बाद फिनिश कर देंगे। यस समृद्धि। Yes, sir. What is the function of chromosomes? Sir, can you repeat the question? Function of chromosomes. Prince, what are the function of chromosomes? Sanjay? Sir, carry genes. Okay. Carry genes बोलने से काम नहीं होगा, थोड़ा सा और कुछ बोलिए. That is correct, but we have to say transfer characters from parents to next gen. Okay, good. Name the smallest, which is the smallest cell in our body, Samriddhi? Prince? Yes, sir. Smallest cell in our body? Sanjay? Sir, नहीं पता. Ovum. Sir. चलिए, तीनों क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हैं, कल दोबारा स्टार्ट करेंगे. बाकी लोग अपना कैमरा ओपन करिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, देन विल स्टॉप द क्लास.
ये दोबारा होगा समृद्धि का भी, संजय का भी और प्रिंस का भी। अब देखिए, मैं कल आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ, इज इट क्लियर? और कल मैं थोड़ी देर की एक्स्ट्रा क्लास लूंगा 1:30 पर, और उसमें जो 10-12 लोग बचे हुए हैं उनका फिनिश कर दूंगा। और उसके बाद कल वो लोग भी अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं जिनका अभी तक नहीं हुआ है। और उसके बाद मैंने आपको डेट दे दी है, उस पर आपका एमसीक्यू होगा। तो शांति पाठ। Sir, यस smallest cell is बेटा, कल मैं दोबारा लूंगा आपका बेटा, समृद्धि कल लूंगा। ओके, yes, sir. नाउ शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। साई राम। साई राम। Siren sir, thank you Thank you, sir. sir. Sairam, sir.